Welcome, dear students. This is our third lecture on the special theory of relativity. और आज के लेक्चर में हम बात करेंगे टाइम डायलेशन. The word dilation comes from dilate. और अगर हम dilate का मीनिंग देखें, it means to lengthen, to increase. So that means के time dilation deals with the concept of increase of time duration. So let us start. तो सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे कि प्रॉपर टाइम क्या है. अगर कहीं पे एक इवेंट हुआ है या दो इवेंट्स हुए हैं, अगर एक इवेंट हुआ है तो उस इवेंट को कंप्लीट होने में कितना टाइम लगा, कितना टाइम इंटरवल लगा, या दो इवेंट्स हुए तो पहले इवेंट के एंड होने से दूसरे इवेंट के स्टार्ट होने के बीच में कितना टाइम इलैप्स हुआ, तो वो टाइम इंटरवल हमने मेजर करना है. एंड सपोजिंग दिस टाइम इज मेजर्ड बाय एन ऑब्जर्वर who sees the events occur at the same position in space. So that means the events occur at the same position in space for the observer. या हम ये भी कह सकते हैं कि if the event occurs in a frame of reference जिसमें ये event at rest हो, then the time interval between two events or the time interval elapsed for one event is called proper time. और प्रॉपर टाइम को हम टी नॉट से डिनोट करते हैं. नाउ कम्स द कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम डायलेशन. अगर कहीं पे एक इवेंट हो रहा है तो उस इवेंट का टाइम इंटरवल मेजर किया गया, या दो इवेंट्स हुए और उन दो इवेंट्स के दरमियान बिटवीन एंड ऑफ वन इवेंट एंड स्टार्ट ऑफ अनदर इवेंट, उनके दरमियान टाइम इंटरवल मेजर किया गया, और ये टाइम इंटरवल दो ऑब्जर्वर्स मेजर करते हैं. वन ऑब्जर्वर मेजर्स टाइम इंटरवल, तो उसे हम टी नॉट से डिनोट करेंगे, और जो दूसरा ऑब्जर्वर है वो जो टाइम इंटरवल मेजर करता है उसे हम टी से डिनोट करेंगे. तो इन दोनों में फर्क क्या है? टी नॉट is the time measured by an observer जिसके लिए events rest में हो, who sees the events occur at the same position in space. And time t is the time measured by an observer जिसके लिए ये events motion में हो. The events are in motion for the observer who measures time inter equal to t, and the events are at rest. They occur at the same position in space for an observer जो टाइम इंटरवल मेजर करता है टी नॉट, और ऑब्जर्व किया गया है दैट T is greater than T naught. This is called time dilation. The time interval of an event or between two events measured by an observer moving with respect to a clock, या तो ऑब्जर्वर ही मूव कर रहा है विद रेस्पेक्ट टू क्लॉक, या क्लॉक ही मूव कर रही है विद रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, is longer than the time interval measured by the observer who is at rest with respect to the clock. और इन दोनों के हम दरमियान हमें रिलेशन मिलती है t equals t naught divided by under root 1 minus v square by c square. So जिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में
इवेंट्स एट रेस्ट हूं, यानी ऑब्जर्वर को लगे कि ये इवेंट्स एक ही जगह पे हो रहे हैं, द इवेंट्स आर एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू मी, तो वो ऑब्जर्वर जो टाइम मेजर करेगा दैट विल बी टी नॉट। और जिस ऑब्जर्वर को लगे कि इवेंट्स आर इन मोशन या इवेंट रेस्ट में हो और ऑब्जर्वर ही मोशन में हो, तो वो जो टाइम मेजर करेगा दैट विल बी टी। तो उन दोनों के दरमियान ये रिलेशन है, t equals t naught by under root 1 minus v square by c square, and obviously t is greater than t naught, and this phenomenon is called time dilation. Now let us derive expression for time dilation. हमारे पास एक ट्रेन है, this s prime frame, this is basically a train which is moving along x axis with a velocity v. So ट्रेन है, इसके साथ ही हमने एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस अटैच कर दिया है s प्राइम, and it is moving along x axis with a velocity v. इसी फ्रेम में बॉटम पे एक लेजर है, लेजर इज L, and this laser L emits a light pulse in the upward direction. At the top, यानी कि at the ceiling, we have got a mirror M, which is at a distance d from the laser. So the light pulse ये लेजर से इमिट होके ऊपर जाके मिरर से टकराती है. So in the upward journey, it travels a distance d. मिरर इसको रिफ्लेक्ट करके वापस भेजता है लेजर की तरफ, और लेजर इसको वापस रिसीव करता है. So in the downward journey, it travels another distance. So total में जो ये distance travel करती है light pulse, that is twice d. The speed of light, that is same in all frames, that is c, the vacuum light, the vacuum speed of light c. और ये सब ऑब्जर्वेशन हम फ्रेम s प्राइम में कर रहे हैं. No doubt the train is moving, the laser is moving, the mirror is moving, but the frame is also moving. Since the frame is attached with the train, तो इस फ्रेम को लगेगा कि ये सारे इवेंट्स जो हैं ये एक ही जगह पे हो रहे हैं. So the frame s prime जो टाइम मेजर करेगा, that will be the proper time t naught, and we can simply use equation that time interval equals distance traveled by the speed. Now the time interval is t naught, distance traveled is twice d, and the speed is c, the speed of light. So we get equation number 1, that t naught equals twice d by c. So these were the observations made in frame s prime. Now let us go to this frame. अब यही इवेंट्स हम देखेंगे कि फ्रेम एस में कैसे दिखेंगे, बिकॉज फॉर फ्रेम एस द ट्रेन इज मूविंग, सो द लेजर इज मूविंग. सो जिस पॉइंट पे लेजर लाइट इमिट करेगा, तो जब ये लाइट इमिट करेगा तो मिरर भी आगे जाएगा, लेजर भी आगे जाएगा. सो द मिरर विल रिसीव लाइट some distance ahead, और उसके बाद जब मिरर उस लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा वापस, तो लेजर यहां पे नहीं होगा, ये लेजर भी आगे जा चुका होगा. सो लेट अस सी कि इन फ्रेम एस हमें ये इवेंट्स कैसे दिखेंगे. सो दीज आर द ऑब्जर्वेशंस made in frame S. So these are the observations, the events are observed in frame S. The frame is moving, that is the train is moving with speed v.
तो लेजर जो है ये अपवर्ड डायरेक्शन में लाइट पल्स को इमिट करता है ताकि जो मिरर है ये उसको रिसीव करे. बट सिंस द ट्रेन इज मूविंग इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, so the mirror M will not receive light here, it will receive it some distance ahead. And supposing this is the position जहां पे mirror light को receive करता है, and then it will reflect the light vertically downwards towards the laser. But since the train is moving, the whole system is moving, so the laser will not receive the light at N, it will receive it some distance ahead, supposing at point L prime. So laser emits light at point L. So here is the emission at point L as seen in frame S. Mirror receives it at M prime and it reflects back, and the laser receives back at point L prime. तो इस सारे इवेंट में जो टाइम लगेगा that will be measured by frame S as t. अगर टोटल टाइम t है, the total distance traveled by light will be simply speed into time, c into t. तो इस c into t के हम दो हिस्से करेंगे, बिकॉज जितना टाइम लाइट को लेजर से मिरर तक जाने में लगेगा उतना ही मिरर से वापस लेजर तक आने में लगेगा. सो इन गोइंग फ्रॉम लेजर to mirror, it will travel a distance half of ct, so ct by 2. And in going from mirror to laser, it will travel another ct by 2 distance. अच्छा, हॉरिजॉन्टल मोशन अगर हम देखेंगे L to L प्राइम, L से लेके L प्राइम तक जो डिस्टेंस है that will be again speed into time, और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में स्पीड है v. So L to L prime it will be vt. Now because of symmetry, point N is at midpoint, so L से लेके N तक it will be half of vt, so vt by 2, और N से लेके L prime तक it will be another vt by 2. और ऑब्वियसली लेजर से डायरेक्टली ऊपर मिरर तक जाना और मिरर से वापस तक आना, इसमें टाइम कम लगेगा एज कंपेयर टू ये L से M प्राइम तक और M प्राइम से L प्राइम तक जाना. सो ऑब्वियसली the time measured in frame S will be greater. Let us use Pythagorean theorem to the right triangle L N M prime. So right angle is here, so it is a right triangle. So L N को base मानेंगे, N M prime को perpendicular मानेंगे, and the third side will be hypotenuse. तो जब हम इस पे Pythagoras theorem यूज, सो राइट Pythagorean theorem अप्लाई करके हमें ये मिलता है. We will do one thing कि जो ये vt/2 का स्क्वायर है इसको हम लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाएंगे, तो we will get ct/2 whole square minus vt/2 whole square is equal to d square. अच्छा, लेफ्ट हैंड साइड पे t/2 का स्क्वायर हम कॉमन आउट कर सकते हैं, सो इट इज t/2
टू स्क्वायर, तो पहली टर्म में सी स्क्वायर बचेगा माइनस दूसरी टर्म में वी स्क्वायर बचेगा इज इक्वल टू डी स्क्वायर. So this is what we will get. Now we will take square root on, हाँ पहले हम c स्क्वायर से डिवाइड करेंगे on both sides. तो यहाँ पर भी c स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, यहाँ पर भी c स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, यहाँ पर भी c स्क्वायर से डिवाइड करेंगे. तो यहाँ पे पहली टर्म में c स्क्वायर बाई c स्क्वायर, that will become 1. So that one is here. So next we will take square root. So we will take square root here. We will take square root here. We will take square root here, and the distance, the time, they are all positive. So हम सिर्फ positive sign लेंगे. Square and square root will go. Square and square root will go. So we will get t by 2 under root 1 minus v square by c square is equal to d by c. यहाँ सिर्फ t के लिए हम एक्सप्रेशन निकालें. t के डिवीजन में 2 है, वो मल्टीप्लाई होके 2d by c बनेगा इनटू, और ये अंडर रूट टर्म भी डिवीजन में चली जाएगी. सो इट विल बी 1 माइनस v स्क्वायर बाई c स्क्वायर अंडर रूट. तो अगर आप इक्वेशन नंबर 1 देखें, दिस 2d by c is t naught. So we will get t is equal to t naught divided by under root 1 minus v square by c square, and this 1 by under root 1 minus v square by c square, इसको हम gamma से denote करते हैं. And since this gamma is greater than 1, so that means t is greater than t naught. We know that gamma is greater than 1, so t will be greater than t naught. तो जरा इस पे एक प्रॉब्लम करें. Muons are unstable elementary particles that have a charge very much equal to that of electron, but they are massive. Their mass is 207 times that of electron. Muons top of the atmosphere में पैदा होते हैं due to collision of cosmic radiation with atoms of atmosphere at a height of several thousand meters above the surface of Earth. They have a lifetime of only 2.2 microseconds when measured in a reference frame at rest with respect to them, and they travel at a speed of 0.99 c. तो अगर उनका लाइफ टाइम है 2.2 माइक्रोसेकंड, जरा हम देखें कि वो कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं. द डिस्टेंस will be equal to speed into time. Now speed is 0.99 into 3 into 10 raised to power 8 meter per second, that is 0.99 c, into time is 2.2 microsecond, that is 10 raised to power minus 6 second. Second and second will go. जरा हम numerals multiply करें. 0.99 into 3 into 2.2 into 10 raised to power 8 minus 6 meter. So obviously 10 raised to power तो हमें 2 मिलेगा. जरा हम ये न्यूमेरल्स मल्टीप्लाई करके देखेंगे कि हमें कितना वैल्यू मिलता है. So we get 0.99 into 3 into 2.2 is equal to 6.53.
तो जब हम इसको 10⁻² मल्टीप्लाई करेंगे वी गेट 653 मीटर and it is less than 1 kilometer. But we find muons very much at the surface of earth. तो इसका मतलब है कि म्यूऑन्स जो है वो सिर्फ इतनी डिस्टेंस ट्रेवल नहीं करते, वो कम से कम 10 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं. लेट अस सी हाउ दिस इज पॉसिबल. तो पहले तो हम उनका लाइफ टाइम मेजर करेंगे एज मेजर्ड बाय एन ऑब्जर्वर स्टेशनरी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ. तो the proper lifetime of the muons is given T naught, that is 2.2 microseconds, and their travel speed 0.99 times c, that is given. तो एक तो हमने इनका लाइफ टाइम मेजर करना है और दूसरे वो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं ये मेजर करना है. सो द गिवन इज प्रॉपर लाइफ टाइम दैट इज 2.2 माइक्रोसेकेंड्स. इनकी वेलोसिटी 0.99 टाइम्स स्पीड ऑफ द लाइट. तो determine their lifetime as measured by an observer stationary on the surface of earth, that is t measure करना है, and t will be given by t naught divided by under root 1 minus v square by c square, and that is 2.2 microseconds divided by under root 1 minus 0.99 c का square whole divided by c square, and then we have got an under root. So we will get 2.2 microseconds whole divided by under root 1 minus, हम देखेंगे कि 0.99 का स्क्वायर कितना आता है. 0.99 square equals 0.98 into c square, और डिवीजन में भी c square है, that will go. So we are left with 2.2 microseconds divided by under root 1 minus 0.98 equals 2.2 microseconds divided by under root, हम ये डिफरेंस देखेंगे कितनी है, 1 minus 0.98 equals 0.02. Next 2.2 microseconds whole divided by, हम ये अंडर रूट देखेंगे ये कितना है, अंडर रूट 0.02 equals 0.1414. तो जब हम 2.2 को डिवाइड करेंगे 0.1414, तो we get 15.6 microseconds. So according to our frame of reference, muons live for a time of 15.6 microseconds. So we get the time they live or their lifetime as observed by our stationary frame on the surface of earth as 15.6 microseconds. Now we shall see how much distance they travel. Now the distance is speed into time, and speed is c, और time हम t use करेंगे, and sorry, the speed is v. We get their lifetime as per our frame of reference 15.6 microseconds. Now let us calculate how much distance they travel before decaying. So distance is speed into time, v into t. Now v is 0.99 c into time is 15.6 microseconds. So this is 0.99 into c, that is 3 into 10 raised to power 8 meter per second.
into 15.6 into 10 raised to power minus 6 seconds. Second and second will go. Numerals हम अलग multiply करेंगे. 0.99 into 3 into 15.6 into 10 raised to power 8 है यहाँ पे, और यहाँ पे 10 raised to power minus 6 है, so minus 6 मीटर. तो obviously 10 raised to power 2 तो यहाँ मिलेगा मीटर. न्यूमेरल्स का वैल्यू देखते हैं कितना मिलेगा हमें मल्टीप्लाई करके. 0.99 multiplied by 3 multiplied by 15.6 and it comes out to be 46.33. तो जब हम 10 raised to power 2 से मल्टीप्लाई करेंगे we get 4633 मीटर, यानी we get, और अगर हम इसमें किलोमीटर में कन्वर्ट करना चाहें we get 4.633 kilometer. So this is the distance they travel before